back to another video on this channel. Hello and welcome back to another video on this channel. तो अब आओ हम मिलके कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरी क्रिएटिव जर्नी यहाँ से शुरू होती है। अब ये चैनल मैंने बना लिया है तो इसका क्या कर सकते हैं, इस पे कुछ तो अपलोड करना है। नहीं, इस पे सब कुछ अपलोड करना है, अच्छा अपलोड करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सिनेमैटिक इंटरव्यूज क्या होते हैं। तो सिनेमैटिक इंटरव्यूज में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को एक पॉइंट दे देना है, जैसे कि मैंने कैमरा का लेंस रखा हुआ है जिसमें देखते रहना है और टॉप करना है, जो भी करना है। तो अभी मैं बिल्कुल तो कैमरा के एंगल से आपको वास्ता नहीं होना चाहिए, कैमरा की स्क्रीन से भी आपको वास्ता नहीं होना चाहिए, ना ही कैमरा के मॉनिटर से जो मेरे पास है। आपने देखना है तो सिर्फ कैमरा से देखना है, लाइक कैमरा इज योर ऑडियंस। तो ये मेरी भी ऑडियंस है, मुझे भी ये टेक्निक नहीं आती और मैं बड़ा इधर उधर देख बैठता हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद प्रैक्टिस करूँ। तो इस वीडियो का मकसद इतना है कि मेरे साथ ही सीखोगे और मैं जैसे जैसे सीखता जाऊँगा। और आपने माइक को भी नहीं छेड़ना, अभी मैंने छेड़ दिया। आपने मेरे साथ ही सीखना है, जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा आपको भी सिखाता रहूंगा। अभी यहाँ पे हीटर भी चल रहा है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एम्बियंस में शोर आएगा। एम्बियंस के शोर को ख़त्म करने के लिए मुझे और कुछ करना हो या ना करना हो, ये ज़रूर करना है कि ऑडियो लेवल कम करने। अब मैं क्या टेक्निकल बातों में पड़ गया हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात जो है वो कैमरा से को देख के बात करनी। तो अभी कैमरा को मैं देख के बात करता हूँ और देखते हैं कितनी देर तक मैं इस तरह टिका रह सकता हूँ। और तो आई हैव टू डू सम कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एज वेल, so I can it will be my test if I can speak in English or not, I can make videos in English or not. So I am here to talk to you. Hey guys, this is my YouTube channel and I am Adnan. There is no specific reason why I make this channel and I have this kind of name. So I want to make videos, just make videos. This is my fun life and I am loving it. This is not my source of income yet and maybe not in the future, but I can talk to in but I can talk to audience in English and Urdu as well, because I am born Pakistani and never been US citizen. So I just recently bought a 7 IV camera and with this iPhone so to record videos so that my videos got clearer and I got some kind of more quality. So you can see me. I have no particular skill in language or something like talking to some persons. So 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 I want to be a social person on YouTube, not in real physical world. So I am making these videos to become a successful. So I am making these videos to be a successful YouTuber one day. This will be my chance and I forgot, I just messed up. So, so, so this will be my chance to make videos in this accent. This is actually Pakistani accent. I don't know can you understand? You can understand or not. This is actually Pakistani accent, and I don't know you can understand or not. Just keep me in, keep me, just keep me, just keep me just keep me motivated by liking this video and I could be much more than this if I
shit. I can be much more than this if I can get more views and something like very appreciating and well response from you. I didn't even know what to talk about, and just I am trying to make my camera eye contact. So this is actually not the format I am going to be in. This is just a practice match, and I will do practice again and again and again and again. I think my eyes are going off as well, still going off. I don't know, but this. I will make this one day clear. And my contact with camera, this will take absolutely longer time than I am thinking about, but I will do it one day, and there will be no issues for you and me as well. So thanks for watching. अभी तक तो मैंने यूट्यूब के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, मगर कंसिस्टेंट नहीं हो सकता था। उसके पीछे कुछ और भी रीजंस थे अभी, लेकिन जब आ ही गया हूँ तो अब मैंने बिल्कुल इरादा कर लिया है। आई हैव कमिटेड माई सेल्फ टू मेक वीडियो एवरी सिंगल वीक और मेक 2 videos every single week at least 1 year for 1 year. Then your response will matter to me. I don't know if you like my video, my face or not. I am still stuck in it. I am still stuck in it, and I am now finding my content, what to make. But I think I should make a video. Then I will eventually one day find some niche to make videos. I will find what I can make in 2 or 3 years. Nah, that will be very long time. I will inshallah find some niche where you like my content the most, and I can make it in the best possible way. So I am just a indie filmmaker and video editor as well, some little bit motion graphic designer, and eyes off. I am indie filmmaker and video editor and little bit of motion graphic designers, and this is me, and this is my video. I don't know what to do, but I am doing, and I will do it for you, for myself, for my self growth, and that's it. That's it. It was from my side, and I will meet you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.